Hello everyone, welcome back. This video lecture for class 7th, chapter 11, and that is transportation in animals and plants. This is the chapter, we are going to start the chapter, but before going to start, let's start today's session with a short prayer. Join your hands, close your eyes. O पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमारा कौन नहीं, तुमरे बिन हमारा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमारा कौन नहीं, तुमरे बिन हमारा कौन नहीं। So once again, good morning all of you. Hope so you all are in pink in health and enjoying this period of lockdown, isn't it? So, and hoping and I'm wishing and hoping that all should be at home, है ना। घर पे ही प्ले करना है, घर पे इंडोर गेम्स से एंजॉय करना है और घर पे स्टडी भी करनी है। As we all know that exams again are going to come in next month, that is October, isn't it? So we are preparing for the same. Today we are going to start with chapter number 11, that is transportation in animals. So dear students, as we all know, the word that is transportation, that means moving from one place to another. The sources by which we can move from one place to another, that is meant by transportation. But here here is the meaning of transportation in animals and plants. That means हमारी body में भी, as we all know, our body is also functioning by different एक्टिविटीज़, है ना। हमारी बॉडी के थ्रू भी अलग अलग इंटरनल बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं विच आर playing role to do any kind of activity like respiratory system, circulatory system, excretion system, digestive system, isn't it? So these all systems are done by different organs, and all organs are playing in different roles, and in all organs different cells are also working. So same way in animals and plants all functions are done by different organs. अब ट्रांसपोर्टेशन हियर मीन्स बाय ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन जा रहा है। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव लर्नड अबाउट हाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम अकर्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. अंडर दैट वी हैव लर्नड दैट inhalation and exhalation, that means breathing process is done under the respiration process, isn't it? So इसमें inhalation और exhalation में main function is done in the lungs, isn't it? lungs के थ्रू ही ऑक्सीजन रिच इन्हेलेशन हमें लेते थे और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एक्सहेलेशन में हम आउट करते थे एयर, है ना, बॉडी से उसको मूव आउट करते थे. सो उसको इनहेल करते टाइम और एक्सेल करते टाइम जो ऑर्गन्स वर्क कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, ऑब्वियस ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे थे, एयर को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे इन और आउट during the topic that we learned inhalation and exhalation. So all these functions, all these organs which are performing different activities, these all organs are helping and working for transportation of blood and फूड एनर्जी ऑल्सो, है ना. हम जो एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं फूड के ब्रेक डाउन से, जो एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, दैट वी आर टेकिंग आउट बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सेलेशन. तो वो प्रोसेस को करने के लिए भी तो कुछ ऑर्गन्स होंगे ना, है ना. तो वो ऑर्गन्स जो वर्क कर रहे हैं, दैट वर्क आर डन बाय द डिफरेंट आर्टरीज एंड कैपिलरीज एंड वेन्स. About that we will learn later on. So let's start today's chapter, that is transportation in animals and plants. So first of all, we must know that all living organisms like plants and animals need food and oxygen, need food
oxygen and water so that they can survive. That thing we know very well है ना. In previous video lectures we have learned lot of about it है ना, कि कोई भी function हमारी body में कोई भी living organism है उसको survive करने के लिए obvious food, water, air is must. Without these three are, we can say these are the basic needs for the survive for an organism. तो ये तीनों चीज़ हमें सबको चाहिए, like food, oxygen and water. Food we are getting from the plants, that are the autotrophs. Oxygen we are getting from the atmosphere, and water as well. So these elements need to be delivered to their body parts so that they can function properly. हमारी बॉडी में ये सारे एलिमेंट्स की नीड है ना, इसीलिए हमारी बॉडी फंक्शन उसके सारे प्रॉपरली वर्क कर पाएगी. इसी के कारण हमारे सारे जो ऑर्गन्स हैं प्रॉपरली फंक्शन कर पाएंगे. इफ़ यू आर गेटिंग फूड, ऑक्सीजन एंड वाटर इन प्रॉपर अमाउंट इन आवर बॉडी. सो हेंस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन देयर बॉडीज. ऑब्वियस, अगर हम फूड ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, वाटर हमारी बॉडी में इनहेल कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, सो देयर आर दीज all functions can done by पर्टिकुलर ऑर्गन्स. कुछ ऑर्गन्स होंगे जो हमारी बॉडी में ये सारी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं है ना, सारी चीज़ों को, सारे एलिमेंट्स को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. एंड ड्यू टू दैट वी आर गेटिंग nutrients from these all components, isn't it? So all these functions can be properly by only these, due to these elements, and these are the elements which are needed by our body, which are needed by all organism, and these all organs need to transport system in their body. Moving further, first we will talk about human circulatory system. ठीक है, under transportation इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव डन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, कि हम रिस्पायर कैसे करते हैं, दैट मीन्स ब्रीदिंग हम प्रोसेस हमारा बॉडी में कैसे कंप्लीट हो रहा था. अंडर दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ व्हाट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम? लेट्स स्टडी अबाउट इट. द सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क दैट सप्लाइज फूड, water, oxygen and other substance throughout the body. That I already studied about it कि फूड, वाटर, ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी के बेसिक एलिमेंट्स हैं जो नीडेड हैं सर्वाइवल के लिए, these all must be circulate or transport by different organs, isn't it? So ये सारे और जो सारे एलिमेंट्स नेसेसरी है वो पूरी बॉडी तक पहुँचते हैं, but under the circulatory system. So we can say there are three main parts of circulatory system by which whole transportation work of human body occurs है ना. सारे सर्कुलेटरी सिस्टम को कवर करने के लिए मेन जो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क हो रहा है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंडर हो रहा है. और जो इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंडर तीन मेन पार्ट्स हैं विच आर फर्स्ट ब्लड, सेकेंड ब्लड वेसल एंड थर्ड इज हार्ट. So first of all we will learn about what is blood and what are the functions of the blood, isn't it? Now this is very common thing that blood color is red, that we know very well है ना, हम सबको, छोटे बच्चे को भी पता है कि blood का कलर red होता है. So what is the blood? Blood is red color fluid that flows in our body through the blood vessels. Obvious body में blood flow करता है and that is fluid, liquid, some liquid element, isn't it? So हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का जो फ्लूइड है फ्लो करता है हमारी पूरी बॉडी में, बट इट इज़ नॉट फ्लो बाय इन ओन वे, अपनी तरह से पूरी बॉडी में ऐसे फ्लो नहीं करता रहता है. लाइक हमें जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से वाटर हमारे घर तक आता है, तो देयर इज़ सम प्रॉपर फंक्शन, सम सर्टेन मशीनरी एंड पाइप्स के थ्रू हमारे घर तक पहुंचता है ना. डायरेक्ट हमारे घर से वहाँ से थ्रो नहीं किया जाता कि हमारे घर पानी डायरेक्ट बारिश आ गई पानी की, तो कुछ पाइप्स के थ्रू हमारे घर तक कुछ ऐसा सिस्टम सेट किया होता है जैसे हमारे घर तक पानी आ जाता है, isn't it? सेम लाइक इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में भी ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड white blood cell, WBC, red blood cell, all other cells are also there which are functioning, and these all cells
जो बॉडी में वर्क कर रहे हैं, जो भी ब्लड का फ्लो हो रहा है वो किसके थ्रू होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू, है ना. नाउ व्हाट आर द ब्लड वेसल्स दैट वी ऑल्सो लर्न बाय दिस चैप्टर, दैट इज लाइक आर्टरीज एंड वेन्स. वेन्स और आर्टरीज होती है जो ब्लड को, गुड ब्लड को लंग्स तक ले जाती है, और veins are also there which are working under the blood circulatory system. So what is the function of the blood? There we can say blood act as a medium of transportation of essential substances throughout our body such as oxygen and nutrients. ठीक है, such as oxygen and nutrients. Now what is the function of first of all blood? Here we can say blood act a medium, है ना. ट्रांसपोर्टेशन का जो सबसे इसेंशियल सब्सटेंस है उसके लिए ब्लड एक प्रॉपर मीडियम है जिसके थ्रू ब्लड का सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी में, है ना. हमें पता है इन्हेलेशन के टाइम हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, इजंट इट. अब ये जो पूरा ऑक्सीजन है ये भी तो पूरी बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंचता होगा, है ना. वो किसके थ्रू पहुंच रहा है, ऑब्वियस इट इज़ देयर blood. Blood is the medium under which oxygen and different types of nutrients transport throughout the body by these blood, है ना. here is the blood only medium जिसके थ्रू पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स भी पहुंच रहे हैं. मतलब ब्लड के फ्लूइड के साथ साथ ही ब्लड के फूड के न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन भी पूरी बॉडी में मूव करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, isn't it? Secondly we can say blood carries oxygen from the lungs. ब्लड, हमें पता है इनहेलेशन के टाइम इनहेल करते हैं हम ऑक्सीजन को, है ना. तो जो लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंची उसको अब कैरी करके सारे पार्ट्स तक भी तो पहुंचाना होगा ना. सिर्फ लंग्स तक वो ऑक्सीजन नहीं रहेगी, वो ऑक्सीजन हमारे सारे बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है, ब्लड. नाउ हियर ब्लड वी कैन से carries oxygen from the lungs and transport it to different cells of body. Clear? Blood is the medium of transportation under which there is some vessels are there, blood vessels are there which are transporting the blood with oxygen and nutrients. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑक्सीजन. जो लंग्स तक हमने इनहेलेशन के टाइम ली वो ऑक्सीजन को वहाँ से पिक करके पूरी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करने का काम अगेन ब्लड इज़ डूइंग. Secondly, blood also carries waste materials to the kidney which they filter the blood. That we also know in previous chapters. That what is the work of the kidney? किडनी हमारे बॉडी में जो भी मटेरियल आता है उसको अगेन वहाँ से फिल्टर, ब्लड को फिल्टर करके और वो किडनी स्मॉल इंटेस्टाइन तक डाइजेस्टेड फूड को पहुंचाती है. एंड व्हाट इज़ द दैट वी लर्नड इन द अंडर द टॉपिक ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इजंट इट, कि किडनी से जो भी वेस्ट मटेरियल किडनी तक पहुंचता है वहाँ से ब्लड अगेन फिल्टर होके कहाँ पे जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन जा रहा है. और व्हाट इज़ द वर्क ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? दैट digest all the nutrients from the different food particles, isn't it? जो भी हमारे बॉडी में फूड गया उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब करने का काम कहाँ पे हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन. सो वी कैन से इन स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट्स. स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा प्रोसेस ओवर होता है, क्योंकि लास्टली स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर ऑल nutrients are absorbed and waste material are thrown out in large intestine, and after large intestine it will come out of the by the excretion process, isn't it? हमारी बॉडी से वेस्ट थ्रो आउट किया जाता है. So blood are the carrier waste material to the kidney. Blood again here working for the waste carrying for the waste material to the kidney where the filtration of blood processes occurs. The small intestine digests food and absorbs nutrients. क्या कर रहा है small intestine यहाँ पे? फूड को डाइजेस्ट कर रहा है और एब्जॉर्ब कर रहा है न्यूट्रिएंट्स को. दीज न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू ब्लड. अगेन व्हाट इज हैपनिंग बाय द ब्लड अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड डाइजेस्ट हो गया वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए, दीज न्यूट्रिएंट्स और are provided to all the parts of body through the blood. Obvious, again blood is working here, blood is functioning like carrier of the all nutrients to transport the all parts of the body, isn't it? So here clear the thing, what is the work of the, what is the function of the blood? Blood is the medium
for the transportation of the essential nutrients. Secondly, blood carrying lungs and transport to the oxygen to all the body parts, to all the body cells. Next, blood is also carrier for waste material to throw out the waste material to kidney, and kidney, what is the working? Kidney is filtering the blood, and then food which is absorbed by the small intestine, digested by the small intestine, absorb the nutrients by the small intestine, and lastly the nutrients which are absorbed by the small intestine, these all are transported to all parts of the body by the blood. Fine. So this is the blood circulatory system. First part, blood circulatory system में हमने 3 parts mainly we have talked. First is the blood. Here blood is complete. What is the blood and what are the function of blood? Second thing, the blood vessels. Now what are the functions of the blood vessels that we talk about? The blood are protected the body from losing. Again, some another functions are of the blood, that are the blood are also protects the body from losing blood of forming a blood clot. As we all know, you know, sometimes when we are met with an accident, what is happening at that time, blood हमारी बॉडी से कंटिन्यूस निकलता जाता है ना. जब बड़ी इंजरी होती है, बहुत ज़्यादा हमें चोट पहुंचता है, तो तब हमारे ब्लड से ब्लड कंटिन्यूस फ्लो आउट होता जाता है. बट देयर आर द ब्लड खुद का ही प्रोटेक्शन करता है इंटरनली. उसमें सम क्लॉट्स होते हैं, छोटे छोटे क्लॉट्स होते हैं, मतलब जम जाना लाइक ब्लड है ना, दैट इज़ मीन बाय क्लॉट्स. तो क्लोट्स क्या करता है, जैसे हमारी बॉडी से ब्लड निकलता है तो क्लोट्स आके उसको स्टॉप कर देते हैं. क्लोट्स उसको ब्लड को वहाँ आगे फ्लूइड होने से स्टॉप कर देते हैं. राइट, दैट मीन्स ब्लड इज सेल्फ प्रोटेक्टिव. खुद का ही प्रोटेक्शन कर रहा है ब्लड की, ताकि बॉडी से ब्लड ज़्यादा फ्लो ना हो सके बाय मेकिंग क्लोट्स. इज़न्ट इट? ब्लड में ब्लड क्लोट्स होते हैं, जिसके कारण ब्लड फ्लो ज़्यादा हमारा नहीं हो पाता. हम किसी भी मीडियम से, किसी भी एंटीबायोटिक से ब्लड को स्टॉप करने की ट्राई करते हैं, एंड देयर आर क्लोट्स आर playing again important role to stop the flow out of the blood, isn't it? So the blood contains a special substance that help in the regulation of the temperature of the body. Again हमारी बॉडी में जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, वैसे ब्लड टेम्परेचर इज ऑल्सो देयर, है ना. आपने सुना होगा हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, isn't it? So blood here functioning like the to maintain the temperature of the body. हमारी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी ब्लड का बहुत बड़ा रोल होता है. So here we talked about blood, isn't it? Now we will discuss about, there are again further blood is divided in different 4 parts, है ना. ब्लड के भी कंपोनेंट्स होते हैं. प्रीवियसली वी हैव टॉक अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स, isn't it? The components, parts of the circulatory system. Under that we have talked about first blood, second blood vessel, and third is heart. We are talking about just now blood. What is the blood? What are the functions of the blood, isn't it? Now further, blood is divided into different 4 parts. First, blood plasma. Second, red blood cell, that is also named by RBCs, right? And third is like here RBC, red blood cell, that means RBCs, right? Like this way we are writing. And next is the white blood cells, that is WBCs. Okay, so this is the white blood cells. And fourth is the blood platelets. So we can say again, blood are further divided into 4 different parts. First, blood plasma, second, red blood cells, and third is white blood cells, and fourth is the blood platelets, isn't it? So here we have completed the component of the circulatory system, that is blood. In next video lecture we will again meet with this to continue this topic, that is components of the blood. Till that, take care. Goodbye.